Hello friends, hope all of you are doing well. Welcome to all of you to the fourth part of the series of The Wasteland by T.S. Eliot. In today's part, we'll be discussing one of the shortest part of this entire poem, Death by Water. दोस्तों क्योंकि ये पार्ट सबसे शॉर्टेस्ट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक आप बने रहिए क्योंकि हम लोग डिटेल्स में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे कि इस पूरे पोएम को कैसे एनालाइज किया जा सकता है या कैसे इस सेक्शन को पर्टिकुलर डेथ बाय वाटर को अच्छे से समझा सकता है और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इनपुट भी देंगे जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, ठीक है। So in the beginning I'll give you a small summary of the entire section Death by Water. After that I'll talk in details regarding the title Death by Water, why the author or the writer chose this title, and will describe each and every line in a very precise manner, and also will be giving you some specific inputs for your exams. So basically the shortest section of the poem Death by Water describes a man, Phlebas the Phoenician, who has died apparently by drowning. In death he has forgotten his worldly cares as the creatures of the sea have picked his body part. The narrator asks his reader to consider Phlebas and recall his or her own mortality. सो दोस्तों अभी आप थोड़ा बहुत कंटेंट के बारे में जान चुके हैं डेथ बाय वाटर। अभी चलिए डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन कैसे ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कनेक्टिंग लिंक बनता है आखिरी पार्ट व्हाट द थंडर सेड के साथ। तो डेथ बाय वाटर दोस्तों इसके बहुत सारे रेफरेंस हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट है, बेसिकली प्रोटैगनिस्ट ही बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को डिस्कस किया गया है, तो उनका डेथ वाटर में ही होता है। तो वाटर का नेचर बेसिकली यू कैन कैटेगराइज इट इनटू टू वेज, इट कैन गिव यू डेथ और लाइफ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वाटर विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डेथ। तो इस रेफरेंस में टी.एस. एलियट ने इस टाइटल को चूज किया है डेथ बाय वाटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सेक्शन, फ्लीबस द फिनोशियन। दोस्तों अभी मैं जो पहले आपको बोलता रहता हूँ कि कैसे ये जो वेस्टलैंड है इसके हर सेक्शन कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो आपका पहला सेक्शन था जिसपे मैंने बात किया था अबाउट द सोसोस्ट्रस, मैडम सोसोस्ट्रस, कैसे उन्होंने एक ड्राउंड सेलर फिनोशियन सेलर के बारे में बात किया था इन हर टैरेट कार्ड्स। जब उन्होंने कार्ड्स निकाले थे तो वहाँ पे ड्राउंड फिनोशियन सेलर के बारे में बोला था। तो दिस इज द पर्सन शी वॉज टॉकिंग अबाउट। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑब्वियसली गो थ्रू ऑल द सेक्शंस सिमिलरली, आई मीन लाइक वन आफ्टर अनदर, उसके बाद आप डेथ बाय वाटर में आओ। तो मेरा सजेशन आपसे ये होगा कि अगर आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे इस रिगार्ड में, द बरियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस एंड जो पिछला पार्ट मैंने किया था, तो मुझे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप काइंडली वो तीनों पार्ट्स देख लो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है ना। सो द ऑथर हैज मेंशन अबाउट फिनोशियन, द sailor being Phoenician. Basically Phoenicia was an ancient Semitic speaking civilization that originated in the Levant region of the Eastern Mediterranean, specifically modern Lebanon. दोस्तों मैं ये बात आपको बताता चलो कि ये जो सिविलाइजेशन है, जो फिनोशिया है, जिसमें जो लोग रहते थे उनको फिनोशियन बोलते थे, वो बिफोर क्राइस्ट वाला पीरियड था, ठीक है। बहुत ही पुराना पीरियड को यहाँ पे ऑथर ने रेफर किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप एग्जाम में डाल सकते हो अबाउट द फिनोशियन। ए फोर्टनाइट डेड, इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर पहले लाइन में ऑथर ने इंट्रोड्यूस किया है फ्लेबस, ही इज ऑलरेडी डेड और उनको मरे हुए अराउंड 14 डेज हो चुका है, ठीक है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते। फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स, दोस्तों यहाँ पे गर्ल्स का मतलब है लॉन्ग विंग्ड वेब फुटेड सी बर्ड। अगर आपने ज्योग्राफिक चैनल्स में कुछ वीडियोस देखे हैं ऐसे मतलब नेचर के, तो वहाँ पे आपको ऐसे बहुत दिखने को मिलेगा कि सी साइड में एक स्पेसिफिक टाइप का बर्ड मिलता है जो बहुत ही लॉन्ग विंग्ड है और वेब फुटेड होता है एक्चुअली बत्तख की तरह, और इट्स एक्चुअली कंसिडर्ड एज ए सी बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं क्योंकि सेलर्स जो हैं, जो मतलब यू नो फॉर देयर बिजनेस, जो सी में एक्सप्लोरेशंस करते हैं, बेसिकली दे आर वेरी फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ क्राइज ऑफ गर्ल्स। तो since the protagonist Phlebas is already dead, therefore he has already forgotten the cry of girls and the deep sea swell. दोस्तों यहाँ से इस लाइन में बहुत कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। एंड द डीप सी स्वेल, इसका मतलब ये है कि उनका बॉडी अभी भी पानी में ही है, ठीक है। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, सो बेसिकली द पीपल, द सेलर्स जो एक्सप्लोर करते थे सी फॉर डिफरेंट लैंड्स, फॉर न्यू लैंड्स, और नहीं तो कुछ नया प्रॉपर्टी और अनएक्सप्लोर्ड थिंग्स, तो
उन लोग के लिए अपना प्रॉफिट एंड लॉस बहुत मैटर करता था, बट एंड इन दिस केस फ्लिबर्स जो ऑलरेडी मर चुके हैं उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि मृत्यु के बाद आपको कोई फर्क नहीं होगा कि आपको आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपके जाने के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिकॉज यू विल टोटली बी अनअवेयर ऑफ इट, ठीक है। अगले लाइन में जाते हैं, ए करंट अंडर सी picked his bones in whispers। दोस्तों whispers का मतलब है speak very softly, बहुत धीमी तरीके से बोलना, ठीक है। A current under sea picked his bones in whispers। तो ये पिछले लाइन को जस्टिफाई करता है जहाँ पे मैंने बोला था कि उनका बॉडी अभी भी पानी में ही है, सी में है, तो उनका जो बॉडी है उसको वो सी के लहरें उछाल रही है, ठीक है। एज ही रोज एंड फेल। तो आपने देखा होगा कि सीज में क्या होता है यूजुअली, एक लार्जर वाटर बॉडी में क्या होता है, जो पानी है, जो लहरें हैं वो बहुत ऊपर तक जाती हैं, और इसीलिए ऑथर ने ये बोला है कि उनका जो बॉडी है इट इज गोइंग अप एंड डाउन। ही पास द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ एंटरिंग द वर्लपूल। पहले ये समझ लेते हैं दोस्तों कि वर्लपूल का मतलब क्या है। वर्लपूल बेसिकली इट्स अ क्विक रोटेटिंग मास ऑफ वाटर इन रिवर और सी टिपिकली कॉज्ड बाय कन्फ्लिक्टिंग करंट्स। दोस्तों चक्रवात जिसे बोलते हैं, जिसका जन्म ही इसलिए होता है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से जब वाटर करंट्स आते हैं तो एक दूसरे के साथ टकराने से वो चक्रवात होता है। यूजुअली लार्जर वाटर बॉडीज में ये देखने को मिलता है, ठीक है। उसके वजह से भी बहुत क्या होता है, शिप्स ड्राउन हो जाते हैं, बहुत लोग अपना जान भी गंवाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, ही पास द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ एंटरिंग द वर्लपूल। तो उस वर्लपूल के अंदर उसका बॉडी तैर रहा है, ठीक है, एंड लिटरली ही इज ट्राइंग टू क्रॉस हिज एज, मतलब मृत्यु के आगे, ठीक है। मरने से पहले ऐसा मतलब बोला जाता है कि आपके आंखों के सामने जो भी आपने किया है, जैसे भी आपने जिए हो, वो सब कुछ आ जाता है। इट्स लाइक ए ग्लैंस कि आप मरने से पहले आपने जो भी किया है अपने लाइफ में वो आप देख पाते हो। तो वही इस बात में रेफर किया है कि उन्होंने अपना एज, अपना यूथ में अपना जान गंवाया है, तो वो सब वो देख पा रहे थे अपने मरने से पहले, बिफोर एंटरिंग द वर्लपूल, मतलब बिफोर गोइंग टू हिज डेथ, ठीक है। अगले लाइन में जाते हैं, जेंटाइल और ज्यू। दोस्तों जेंटाइल का मतलब होता है नॉट ज्यूविश, जो लोग यहूदी नहीं हैं उनको जेंटाइल बोलते हैं, और ज्यू तो होते हैं जो यहूदी लोग हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहूदी जो रिलीजन फॉलो करते हैं उन लोग का ट्रेडिशनल रिलीजन का नाम है जुडाइज्म, ठीक है। जुडाइज्म जो है वो क्रिश्चियनिटी से भी पुराना रिलीजन है, और बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी का इतना प्रोमिनेंस अभी वर्ल्ड में, उसका बेसिक रीज़न एक ज्यू भी है। ये किसी सेपरेट वीडियो में मैं कवर करूंगा। यहूदी लोगों ने एक्चुअली मतलब दे हेल्प्ड इन ए ट्विस्टिंग वे टू मेक क्रिश्चियनिटी मोर पॉपुलर इन द वर्ल्ड टुडे। अगले दो लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने सीधा रीडर्स को, जैसे कि आप लोगों को रेफर करते हुए बोला है, ओ यू मतलब आप लोग रीडर्स, हु टर्न द विल एंड लुक टू विंडवर्ड। हम लोग जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उसको हम लोग को कंसिडर करने की ज़रूरत है, ये समझने का ज़रूरत है कि वी आर मॉर्टल बींग्स, ठीक है। जीवन और मृत्यु एक पार्ट है अब हमारे लाइफ का, ठीक है। ये बात समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए, यही बात ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगले लाइन में लिखा है, कंसिडर फ्लिबस हु वॉज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू। तो उन्होंने यही बोला है कि अपने जीवन काल में हमें जैसे भी हमें जीना है वो तो अपने आप ही है, अपने ऊपर ही है, लेकिन हमें फ्लिबस के बारे में भी सोचना है जिसने बहुत ही जवानी में अपना जान गंवाया था, ठीक है, इन द सी एक्सप्लोरेशंस, फाइन। तो यही दो आखिरी लाइंस है। So as promised, we'll be giving you some inputs for your exam. How can you present your answers in a more presentable way in exams to score more marks with less effort? So let's go to it in a proper English explanation. Fine, because here we are considering English literature. So we'll be giving more emphasis on this language, and we'll try to have a more authentic command on this language. Fine. So first of all, the lines that starts this section particular, death by water, are the lines 312 to 314 that states, Phlebas the Phoenician, a fortnight dead, forgot the cry of girls and the deep sea swell and the profit and loss. So the same section can be expected as an RTC reference to context in your coming June term examination, because this section is a very important from examination perspective. So what are the points? Basically guys, I will recommend that you
whatever section you do, you try to remember them as points. Okay, don't try to mug it up entirely or memorize entire summary of the section. It will not help you to solve the artists which carries the highest mark in this British poetry of your exam. Also, I have got several queries from my students how to nail British poetry easily, because this is one of the paper where most of the students gets backlogs, and there is a specific reason for that, and one of the reason in particular is the artist, the reference to context. So let me tell you and give you a small input of how to remember the poems in a very sorted way. First of all, if you see this section, it is shortest section of the poem. So this is one of the point. I'll go as point wise discussion here. This lines tells us that some guy named Phlebas the Phoenician is the one who's been killed by water. He has been dead for 2 weeks as fortnight. That comes as your second point. The third point is Phlebas is probably connected with the drowned sailor from Madame Sosostris' tarot's card, and for Eliot the image of him drowning is, well, it's quite unclear. So that is the reason, that's why I was emphasizing the fact that you should be very much clear with the first three sections. That's the burial of the dead and the game of chess and the fire sermon. Basically in the first part, the burial of the this one dead, there a character was given Madame Sosostris who took out a tarot card, and one of the tarot card was about a drowned Phoenician sailor. So the author is saying that probably the character is the same guy because the same reference has been pulled out here. Okay, so let's go to the next point. You could say that Phlebas' death is necessary before spiritual rebirth can happen. You could also say that death is death and that's it. So what is being said here is like, with this point you are trying to emphasize or give an idea that before, after your death is very important. Okay, people think that while we live, the living force that is within us is driving us on, but death has equal importance, because in a lot of literatures and a lot of scriptures it is said that it is important for the spiritual rebirth. Okay, death is important for that grounds, on that grounds. Fine, let's go to the next point. When these lines talk about how the dead Phlebas forgot the cry of girls and the profit and loss, which are the lines from 313 to 314, they suggest that Phlebas, now dead, doesn't really worry about worldly things like making money anymore. Fine. The profit and loss refers to the point where human people are driven by the factor of money. We are living because we have to earn money, we have to give ourselves a sophisticated life. That is the basic plot of our life. But after you are dead, you don't care much about money. Okay, Eliot expands on this idea in the coming lines. So one thing that I have not mentioned in the beginning is formally death by water is definitely the most organized and structured of the 5 sections of the Wasteland. It is paced as 10 lines. First of all, you have to remember the total number of lines. It is very vital from the examination perspective. But when you read it loud, you can hear quite a few rhymed pairs in it. Swell and fell, they rhyme a little bit. Jew and you, they also rhyme a little bit. The language of the section is also pretty formal and old-timey, since this section is basically like a classic parable or story intended to teach us an important lesson about pride. Guys, we can end the discussion about any question coming as RTC from this section, that this is basically a part where Eliot is trying to explain us a very important lesson, the importance of death, that the pride that we carry while we are alive is not much of importance when we are dead. Coming to lines 315 to 318, a current under sea picked his bones in whispers. As he rose and fell, he passed the stages of his age and youth, entering the whirlpool. So let us again break this down in points, in 3 points in particular. The lines say that Phlebas passed the stages of his age and youth, entering the whirlpool. Basically, the lines are 317 to 318. This might refer to the idea of your whole life passing before your eyes that usually get associated with the moment right before you die. As I have described before, whenever you die, actually nobody can live after death experience to actually say that what they have seen in their last few minutes of their death, because after that you are not accountable for. But still, it has been written in a lot of books, and there are a lot of references where people say that right before you die, the entire life can come in a glance right before your eyes. That's what is being referred here. Again, let's come to the next point. This could further refer to human brain and how it tries to make a sense of your life only after it's too late to do anything about it. So as I have said that when the moment of death comes,
The entire picture of your life comes in a glance for a particular reason, because your human brain what it does, it tries to make sense that have you make it worth it the entire period where you're alive. So that's the part where Eliot is trying a lot of emphasis, like Eliot is putting a lot of emphasis on. For Eliot, the same might be true of modern people. It's only after they are on the brink of death that they finally take stock of their lives and think deeply about just how shallow they really are. So this is the video, guys. Hope you have liked our new way of explaining things. Basically, I could have wrapped the entire video in a couple of minutes by just explaining the lines. Basically, there are only 10 lines and the title in details, but rather I went ahead and dragged the video a little bit more just to explain you that how can you present the answer when you have sorted your answer as points, fine, and finally summarizing it up in your answer sheet in the examination hall. So this will give you a basic input of how to present your answers and how memorizing and mugging up the answers can really cost you, because British poetry is one of the most challenging paper in MEG program. If you want to nail it, the best way is to discuss or keep things as points in your memory. So if you have still any other doubts regarding this section on any other literary work by any other literary author or novelist, please do comment in the comment section. We'll definitely try to cover it up. Already we are getting a lot of suggestions to cover up a lot of literary works. We are still working on it, and we'll definitely come up with new videos in the coming future. Till then, God bless you and thank you all.